Hello everyone, welcome to the first lecture of electric charges and fields, and today we'll discuss the MCQ questions from the topic of electric charge. The first question is electricity produced on rubbing. So first option is static electricity, second one is electromagnetic, third option is current electricity, and fourth is none of this. So here it will be static electricity. Why? Because in the static, how the static electricity is generated and what are the methods by which methods of generating static electricity, methods of generating static electricity. Static means where the charges will be at rest. So there are three methods. One is friction, and that friction is nothing but it is done by rubbing two objects. Rub, the method of rubbing, and then it is conduction. That means electricity generated by the method of conduction, and another one is induction. So here in this particular case, rubbing comes under this particular it is static electricity. Why? Because it is a method by which static electricity is generated. And electromagnetic magnetic, here in this particular case magnetism is involved. So but here the question is electricity part, so that will not be the option, correct option over here. And current electricity, here in this particular case charges will be in motion, so that will also be, that means here charges are not at rest, and none of this. So finally option A will be the correct one. Moving to second question, here in this particular case, when a person combs his hair, static electricity is sometimes generated by what process? Person is combing his hairs, that means the objects, there are two objects we are involved. One is comb and another one is hair. So how the static electricity is sometimes generated and by what process? Clear? So first option is contact between comb and hair, so results in a charge. So what it is saying, so simply you just keep the comb upon your hair, or just touch it without combing your hair. So in that particular case both of them will get charged. I think that will not be the correct option. Friction between the comb and hair results in transfer of electrons. Friction, here it is saying when you comb your hair, there, that means there will be a friction between them, and it will result in the transfer of electrons. So transfer of electrons from one to other. So it will be a correct option. Similarly, third option is conduction between the comb and hair. So conduction between comb and hair. So what do you basically mean by this conduction process, and how you can generate charge? Clear? And so here actually if you just get to know it, conduction, what do you basically mean by conduction? Conduction is the method of charging, when the objects are in contact. And here in this particular case, the necessary condition, what the necessary condition, one of the object must be charged. One of the object must be charged either positively or negatively. Clear? So one of the object must be charged either positively or negatively. That means here in this particular case, this in the method in the conduction method, what we do generally is that we charge a neutral object. Here in this particular case, method of charging a neutral object is charged positively or negatively. A neutral object is charged either positively or negatively by making
it in contact, by making it in contact with a positive or negatively charged body. Clear? So in this particular case, a neutral object can be charged positively or negatively by making it in contact with a positive or negatively charged object. So this is the method of conduction. And here in this here in so finally in this particular case, neither of the two are already charged. both com and here, यहाँ पे दो जो com and here ये दोनों पहले से ही न्यूट्रल है. यहाँ पे ऐसा नहीं बोला गया कि कोई पहले से ही चार्ज है. क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे ये कंडक्शन प्रोसेस नहीं होगा. क्लियर? Similarly, if you take the case of induction, induction between com and here. Clear? Induction in what do you basically mean by induction? Induction here in it is a method of charging. It is a method of charging when or you can say method of charging without contact. Without contact, बिना कॉन्टैक्ट के जो चार्जिंग प्रोसेस होता है उसी को हम बोलते हैं इंडक्शन. एंड हियर इन दिस पर्टिकुलर केस ऑल्सो सेम कंडीशन वी नीड टू टेक. वन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी चार्ज्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली. वन ऑफ द ऑब्जेक्ट मस्ट बी चार्ज्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली. क्लियर? एंड नेक्स्ट here in this particular case, so what actually happens in induction process, it is in this method of here in this method of charging, in this method of charging, a neutral object is charged positively or negatively by making it in contact. Okay, without contact. Okay, by make, or you can say here in this particular case positively by bringing it in contact, by bringing it in contact. Bringing it not in contact, bringing it near, bringing it near a negative or positively charged body. Clear? And separately here in this particular case, इसमें condition यहाँ पे generally रहता है. ये जो third statement है, इसमें हम एक कंडीशन क्या लेते हैं कि ग्राउंडिंग आपको करना पड़ेगा. ग्राउंडिंग इज इन्वॉल्व्ड. इसमें ग्राउंडिंग यहाँ पे इन्वॉल्व रहता है. क्लियर? तो ये जो दोनों प्रोसेस है, कंडक्शन हो या फिर इंडक्शन हो, इसमें क्या होता है कि न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को तो हम चार्ज करते हैं, बट यहाँ पे फ्रिक्शन वाला केस नहीं होता है. क्लियर? फ्रिक्शन दैट मीन्स वी डू नॉट रब देम. क्लियर? But when you comb your hair, in that particular case we rub, that means friction is involved over there, so that's why these two will not be the case. And in why friction is friction यहाँ पे क्यों लिया जा रहा है, and why friction is involved, or why it is the correct one, because in when we take the comb and hair, जब पहले से हम comb and hair को लेते हैं वो पहले से न्यूट्रल है. तो फ्रिक्शन में क्या होता है, फ्रिक्शन में दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को जब हम रब करते हैं तो एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट से दूसरे न्यूट्रल ऑब्जेक्ट तक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है. तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी होता है वो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है, और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस रहेगा वहाँ पे वो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा. क्लियर? सो फाइनली हियर इन दिस पर्टिकुलर केस दिस काइंड ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी व्हिच इज जनरेटेड बाय फ्रिक्शन बिटवीन कॉम एंड हेयर. सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट वन. Next, moving to question number 3. There are two types of charges, positive charge and negative charge. The property which differentiates the two types of charges is
Okay, field of charge, amount of charge, strength of charge, and polarity of charge. So let us understand one by one what are the options that are given and how will you hear question what it is saying. It is a very nice question. यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो दो तरीके का चार्जेस है यहाँ पे, एक तो पॉजिटिव चार्ज और जो नेगेटिव चार्ज, जिसको हम डिफाइन करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा, वो कौन सा मेथड से प्रैक्टिकली हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. क्लियर. तो प्रैक्टिकली ये बोला जा रहा है कि हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये पॉजिटिव चार्ज हुआ कि ये नेगेटिव चार्ज हुआ. क्लियर. सो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस वन प्रॉपर्टी इट इज सेइंग इज दैट फील्ड ऑफ द चार्ज, चार्ज का जो फील्ड है उससे हम डिफाइन करेंगे. तो फील्ड क्या होता है, फील्ड इज और फील्ड जनरली हाउ टू नो दैट ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज. सो जैसे कि हम फील्ड को डिफाइन करते हैं, कोई भी पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट अगर हम लेंगे तो उसका फील्ड को हम कैसे शो करेंगे, द फील्ड लाइंस के थ्रू हम उसको शो करते हैं. क्लियर. सो फॉर ए पॉजिटिव चार्ज द फील्ड लाइंस आर ड्रॉन रेडियली आउटवर्ड. क्लियर. बाहर की तरफ उसको शो किया जाता है. क्लियर. एंड सिमिलरली इफ यू टेक ए नेगेटिव चार्ज देन इट्स फील्ड लाइंस आर शोन और रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइंस एंड रेडियली इनवर्ड. वो अंदर की तरफ उसको शो किया जाता है. क्लियर. तो ये पॉजिटिव चार्ज का फील्ड है या फिर ये नेगेटिव चार्ज का यहाँ पे फील्ड है. क्लियर. अच्छा, तो हियर इन दिस पर्टिकुलर केस सपोज इफ वी टेक टू पॉजिटिव चार्जेस, मान लो कि दो पॉजिटिव चार्ज हम अगर यहाँ पे लेंगे तो उनका फील्ड लाइंस कैसे रहेगा. सो फील्ड लाइंस विल बी लाइक दिस. सो फील्ड लाइंस रिपल्सिव यहाँ पे रहेगा, तो फील्ड लाइंस का जो रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा रहेगा. Similarly, if you take two negative charges, then their field lines also somewhat look like this, but arrow marks will be represented towards the charge. Arrow mark यहाँ पे अंदर की तरफ रहेगा. क्लियर. तो यहाँ पे अगर हमें फील्ड लाइंस दे दिया गया है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा या फिर कौन सा नेगेटिव होगा. बट दिस फील्ड लाइंस आर, व्हाट आर दिस फील्ड लाइंस, दिस फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी. ये इमेजिनरी है, उसका मतलब है ये इसका रियलिटी में हम उसको देख नहीं सकते. क्लियर. दैट यू कैन नॉट विजुअलाइज, वी कैन नॉट विजुअलाइज. क्लियर. हम इसको खुद नहीं देख सकते या फिर किसी को दिखा नहीं सकते. तो इस वाले पर्टिकुलर केस में मान लो कि यहाँ पे चार्जेस कौन सा है यहाँ पे ये नहीं बोला गया है, बट सपोज वी आर ड्रॉइंग द फील्ड लाइंस टू बी लाइक दिस. अब मान लो कि ऐसे दे दिया गया फील्ड लाइंस, तो यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा या फिर कौन सा नेगेटिव होगा. हियर वी कैन नॉट से. क्लियर. बिकॉज वी कैन नॉट सी द फील्ड लाइंस. तो इसलिए कौन सा चार्ज पॉजिटिव होगा या फिर कौन सा चार्ज नेगेटिव होगा ये फील्ड के थ्रू हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते. क्लियर. नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ चार्ज. अमाउंट ऑफ चार्ज उसका मतलब क्या है, मीन्स हियर इन दिस पर्टिकुलर हाउ मच अमाउंट. फॉर एग्जांपल सपोज इफ यू आर टेकिंग ए पॉजिटिव चार्ज. क्लियर. पॉजिटिव चार्ज ऑफ 10 कूलम. क्लियर. And here another case suppose we are taking another positive charge of 1 coulomb. Clear. तो यहाँ पे चार्ज का जो अमाउंट है, मैग्नीट्यूडाइज कितना अमाउंट में वो प्रेजेंट है, उससे क्या हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सा पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा. दैट ऑल्सो वी कैन नॉट डिफाइन. क्लियर. कितना अमाउंट का चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट है, आइदर पॉजिटिव हो सकता है या फिर नेगेटिव होगा. तो उससे भी हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि कहीं पे मान लो कि ये 10 कूलम का चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, तो कौन सा चार्ज प्रेजेंट है वो हमें पहले से डिफाइन करना पड़ेगा. क्लियर. तो इसलिए अमाउंट ऑफ चार्ज से हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि कहाँ पे कितना कौन सा पॉजिटिव है या फिर कौन सा नेगेटिव है. उसका एक दूसरा भी एग्जाम्पल आप ऐसे भी दे सकते हो. सपोज इफ यू टेक ए थिन शीट ऑफ गोल्ड. क्लियर. गोल्ड फॉइल का जो आपका एपरेटस है, या फिर अगर मान लो कि एक थिन शीट आप ले लो, शीट ऑफ गोल्ड, एंड आप अगर हम उसको थोड़ा बहुत बेंड कर लेंगे, इफ यू जस्ट फोल्ड इट, मान लो कि हम उसको फोल्ड कर रहे हैं
Suppose after folding it looks like this. It somewhat looks like this. Okay. Suppose if we give some charges, that means suppose if we give some electrons to this gold which is folded, then if we increase the number of charges, if we transfer more and more number of electrons, that means we are transferring more and more amounts of charge. Clear? So and these charges will these negatively charged electrons will gather on the surface of this sheet. Clear? As more and more amounts of charge gather on the surface, then what will happen? This particular sheet, this gold sheet will just spread. That means spread. How it will spread? It will look like this. It will look something like this. Yes, I could. Clear? Because there will be repulsive force between the two folded parts of the given sheet. Clear? तो अमाउंट ऑफ चार्ज से यहाँ पे ये मालूम नहीं पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव है या फिर कौन सा नेगेटिव है. सो दिस विल नॉट बी ए परफेक्ट option. Similarly, strength of charge. Suppose if we take the case of this particular, what do you basically mean by strength of charge? Suppose here in this particular case, suppose if I'll be taking a positive charge of 10 coulomb and another charge, suppose another positive charge if I'll be taking, that is of 1 coulomb. Clear? Then here in this particular case, the strength of 10 coulomb charge, that means what? The strength with which it will repel this 1 coulomb of charge. Clear? That will be larger as compare suppose हम एक दूसरा चार्ज लेंगे यहाँ पे जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 1 coulomb, और वही एक्सपेरिमेंटल चार्ज, मान लो कि जो टेस्ट चार्ज के हिसाब से हम 1 coulomb को ले रहे हैं, तो ये वैसा रहेगा. क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो स्ट्रेंथ किसका ज़्यादा होगा? रिपल्सिव फोर्स में, रिपल्सन के हिसाब से. सो द 10 coulomb charge will be having more strength as compared to, or the force of repulsion due to the 10 coulomb charge will be more as compared to the force of repulsion due to this 1 coulomb charge. Clear? सो ये दोनों एग्जाम्पल में यहाँ पे स्ट्रेंथ से ये मालूम नहीं होगा कि कौन सा पॉजिटिव हुआ या फिर कौन सा नेगेटिव हुआ. इस केस में आप ऐसे भी लिख सकते हो. अगर नेगेटिव चार्ज लोगे, suppose if you take 10 coulomb of negative charge and another negative charge of 1 coulomb, and similarly here if you take 1 coulomb of negative charge and another 1 coulomb of negative charge. Clear? So here also you will be getting the repulsive force and direction of force will be away from the charge. Clear? So strength of charge that never tells you that which one will be positive or which one will be negative. So option C will be incorrect. So finally here in this particular case, polarity, what it is saying, the polarity of charge, another property. So polarity से क्या हम define कर सकते हैं, कौन सा positive है या फिर कौन सा negative? Yes, polarity will be a case, because here how to know that polarity will tell you, because polarity, how do you define that polarity term? Because when in the method of charging, जो मेथड रहता है, जो कि आपका फ्रिक्शन हो या फिर जो आपका कंडक्शन हो या फिर इंडक्शन हो, ये जो प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जनरली होता है. क्लियर? इंडक्शन में तो जनरली हम ग्राउंडिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे अप्लाई करते हैं, बट बाकी सब में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पे होता है. क्लियर? एंड आफ्टर द गिवन प्रोसेस जो ट्रांसफर होने का जो प्रोसेस है, उस वो खत्म होने के बाद क्या होगा, वो खत्म होने के बाद एक पॉजिटिव होगा, दूसरा नेगेटिव होगा. सो वन ऑब्जेक्ट विल बी पॉजिटिवली चार्ज एंड अनदर विल बी negatively charged. Clear? So negatively charged, that means that object will be having excess of electrons, that means that acquire negative polarity. इसको क्या बोला जाता है साइंटिफिकली और फिजिक्स में? यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में रहेगा, that will acquire negative polarity and simultaneously the either one, और जो जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ है, that will acquire positive polarity. ये जो टर्म्स है ये
एक ये जो पॉजिटिव पोलैरिटी या नेगेटिव पोलैरिटी, दैट टर्म्स विल बी यूज्ड वेरी फ्रीक्वेंटली। यहाँ पे जो कमिंग चैप्टर से चैप्टर 2 हो या फिर 3 हो, ये जो टर्म्स है यहाँ पे क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यहाँ पे यूज किया जाएगा। क्लियर? तो इसलिए यू मस्ट गेट एक्वेंटेड विद दिस काइंड ऑफ टर्म्स। क्लियर? तो यहाँ पे पोलैरिटी से हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर ये ऑब्जेक्ट नेगेटिवली चार्ज होगा। सो पोलैरिटी इज ए काइंड ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ द चार्ज, क्लियर, which can differentiate two types of charges, which one will be positive and which one will be negative. Moving to fourth questions, what will happen when we rub a glass rod with silk cloth? So everyone knows that when you rub a glass rod which is already neutral, clear, with a silk cloth, this is glass rod and here this is silk cloth. So both are neutral. Glass rod is neutral. That means total charge present over here is 0. Clear? And this silk cloth is also neutral. This silk cloth is also neutral. That means net charge right now in this particular object is 0 before rubbing. Clear? And after rubbing, what will happen? Everyone knows that after rubbing, transfer of electrons takes place from glass rod to silk cloth. Electrons are transferred from the glass rod to silk cloth. Suppose here in this particular case, one electron is transferred, then there will be a deficiency of one electron in the glass rod and excess of one electron in the silk cloth. So with this case, what will happen? जितना देर तक आपका फ्रिक्शन का जो प्रोसेस चलता रहेगा, रब करते रहेंगे, तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ट्रांसफर होगा. सो फाइनली व्हाट विल हैपन, दिस ग्लास रोड विल एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड द सिल्क क्लॉथ विल एक्वायर इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज. क्लियर? सिल्क क्लॉथ क्या होगा, वो इक्वल अमाउंट का नेगेटिव चार्ज वहाँ पे एक्वायर करेगा. क्लियर? तो ये होता है. तो सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला गया, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द ग्लास रोड आर ट्रांसफर्ड टू द सिल्क क्लॉथ. ओके, दैट इज ऑल्सो करेक्ट. The glass rod gets positive charge and silk cloth gets negative charge. That is also correct. New charges are created in the process of rubbing. So one thing we must remember here, that this particular concept is wrong. No new charges. No new charges are created in any of the methods ऑफ चार्जिंग. मतलब कोई भी मेथड आप ले लो, चाहे वो इंडक्शन हो या फिर कंडक्शन हो या फिर फ्रिक्शन, कोई भी मेथड में न्यू चार्जेस क्रिएट नहीं होता है. जो चार्जेस ऑलरेडी प्रेजेंट है बॉडी के अंदर में, उसी का वहाँ पे इम्बैलेंस होता है. मतलब एक ऑब्जेक्ट से कुछ चार्जेस मतलब इलेक्ट्रॉन्स दूसरे ऑब्जेक्ट तक चला जाता है. क्लियर? So that will not be the correct one. So and option D, what is saying, both A and B are correct. So option D is the correct one. Moving to question number 5, here what is saying, when two bodies are rubbed against each other they acquire. Okay, when just right now previously what we discussed in the previous case, यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर ग्लास रॉड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है. मान लो कि यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुआ, तो 3 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज कितना होगा, 3 इंटू 1.6 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम. दैट मीन्स हियर 4.8 इंटू 10 to the power minus 19 कूलम. क्लियर? दैट मीन्स हाउ मच चार्ज विल बी एक्वायर्ड बाय ग्लास रॉड. Charge acquired by glass rod, positive charge, it will acquire positive charge. That means how much charge it will acquire, 4.8 into 10 to the power minus 19 coulomb of positive charge. And how much charge will acquire by silk cloth, it will acquire negative charge, and negative charge of how much, minus 4.8 into 10 to the power minus 19 coulomb. So here in this particular case we must remember that in the methods of charging, equal amount of charges, then generally it will acquire. Clear? So here equal and opposite. Clear? So when two bodies are rubbed against each other they acquire equal and similar charge. Clear? That will be wrong. Similar charge means both will be positive or both will be negative.
that is not correct. Equal and opposite charges, okay, that will be correct, because equal amount of charge, magnitude wise equal, and opposite means one will be positive and another will be negative. Unequal and similar charges, that is not correct. Unequal and opposite charges, that will also not correct. So option B will be the correct one. Next, question number 6, what it is saying, object may acquire an excess or deficiency of charge. Okay, excess or deficiency of charge, that means here we are discussing once again about the methods of charging: friction, conduction or induction. Clear? So here in this particular case, we have to check which one is coming under this three category or similar kind of. So hammering is not, hitting is also not, and shaking is also not. Rubbing means here friction is involved, so that means that will be the correct option. Excess and deficiency of charges are created by friction, that is rubbing. So option D will be the correct one. Question number 7, an object is charged when it has a charge imbalance, which means what do we basically mean by that one? An object is charged when it has a charge imbalance. Charge imbalance means total amount of positive charge magnitude wise contained in the given object is not equal to total amount of negative charge magnitude wise contained in the given object. इसका charge imbalance का मतलब, this indicates charge imbalance. So उसका मतलब क्या है? Object contains no protons. Clear? Statement wise, object contains no protons. That is never ever possible, because if you take any object that must be having protons, that means positive charges, and these protons are present inside the nucleus, and they are bound with the strongest force of nature, that is nuclear force. That is nuclear force. So, and it is very difficult to remove the protons from the given object or given atom. So here if we say that object contains no protons, that is not possible. Clear? Similarly, object contains no electrons, that is also not possible. Why? Because if you take any object, clear, if you take any conductor, suppose object जो हम लेंगे, मान लो कि conductor ले रहे हैं. So conductor में electrons present होंगे. What kind of electrons you will get? You will get two kinds of electrons in a given conductor. One is free electron and other one is bound electrons. Clear? So what are free electrons? Free electrons are nothing but those electrons which are present on the outermost orbit. Outermost orbit में जो इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे वो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? एंड बाउंड इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर नॉट प्रेजेंट, व्हिच आर दीज आर मींस इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. Clear? And it is very difficult to remove this innermost electrons. Clear? So generally, because they are bound with the strongest, they are bound with the strong electrostatic force. Clear? So here in this particular case, we can, if you say that the object contains no electrons, it will be a wrong case. Clear? And option C, object contains equal number of electrons and protons. Equal number of electrons and protons. ओके, इक्वल चार्ज इम्बैलेंस यहाँ पे हो रहा है, तो इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो चार्ज भी तो सेम रहेगा, बिकॉज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स possess the charge of protons are having positive 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb and electrons possess negative 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. तो मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों का चार्ज सेम है, तो अगर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स रहेगा तो चार्ज भी तो इक्वल होगा वहाँ पे. क्लियर? मैग्नीट्यूड वाइज. सो ये वाला स्टेटमेंट भी यहाँ पे नहीं होगा. ऑब्जेक्ट कंटेंस अनइक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दैट विल बी द करेक्ट. क्लियर? कहीं पे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और प्रोटॉन्स कम होगा, या फिर प्रोटॉन्स ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स कम होगा, तो वहाँ पे क्या हो सकता है? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर वहाँ पे कहीं से किसी तरफ हो सकता है. क्लियर? तो दैट विल बी इम्बैलेंस, मतलब ये वाला स्टेटमेंट आपका सही होगा. Okay, next question is which of the following material is the best conductor of electricity? So here in this particular case,
कंडक्टर कौन सा बेस्ट होगा या फिर वर्स्ट इंसुलेटर होगा। तो इस वाले केस में हमें जनरली क्या ध्यान में रखता है, वी जस्ट हैव टू गो जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डू बेसिकली मीन बाय कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी क्लियर, ये वैल्यू से, ये अगर मटेरियल का वैल्यू आपको मालूम है देन यू कैन से दैट व्हिच वन विल बी गुड कंडक्टर और बेस्ट कंडक्टर। जनरली बेस्ट कंडक्टर वाइज हियर इट हैज टोल्ड दैट बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्लियर आउट ऑफ दिस फोर क्लियर। अगर यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिया होता तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर क्लियर, उसके बाद उसके नीचे आएगा आपका कॉपर क्लियर। सो अगर कंडक्टिविटी वैल्यूज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसमें किसका सबसे ज़्यादा है, इसमें कॉपर का सबसे ज़्यादा होगा, उसके नीचे आपका आएगा गोल्ड, फिर उसके नीचे आएगा प्लैटिनम एंड आफ्टर दैट इट विल बी सिलिकॉन। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कंडक्टिविटी वैल्यू क्लियर। तो कंडक्टिविटी वैल्यू अगर इंक्रीज होता है तो वो अच्छा कंडक्टर उसको माना जाता है क्लियर। तो ऑर्डर भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि गोल्ड या फिर कॉपर का जो ऑर्डर है या फिर सिल्वर का जो ऑर्डर है 10⁻7 ओके ऑर्डर में रह रहा है, लेकिन सिलिकॉन के यहाँ पे 10⁻2 to 10 और प्लैटिनम का 10⁻6, तो ये ऑर्डर में यहाँ पे चेंजेस आ रहा है क्लियर। सो इसलिए कॉपर यहाँ पे क्या होगा, दैट विल बी ए बेस्ट कंडक्टर आउट ऑफ दिस फोर। Which of the following is not an insulator? Not an insulator means that must be a conductor. Clear? So dry air, diamond, ebonite, and human body. Similarly, here also in this particular case, we need to check the conductivity values of the given objects. तो कंडक्टिविटी वैल्यूज अगर हम यहाँ पे टेबल में देखेंगे तो इबोनाइट का जो कंडक्टिविटी है वो 10⁻15 बहुत कम आ रहा है, ड्राई एयर का थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एबोनाइट 10⁻12 के ऑर्डर में आ रहा है, डायमंड का थोड़ा और है और ह्यूमन बॉडी का उससे ज़्यादा है। दैट मीन्स हियर कंडक्टिविटी वैल्यू आउट ऑफ द गिवन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स out of this four, human body is having the highest one. So human body here in this particular case it's generally not considered to be as an insulator, उसको हम insulator के हिसाब से कंसिडर नहीं करेंगे। अगर आप कंडक्टिविटी वैल्यू देख रहे हो, चेक कर रहे हो, तो जिसका कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा दैट विल बी ए गुड कंडक्टर। एंड अगर आप रेजिस्टिविटी वैल्यू चेक कर रहे हो तो जिसका रेजिस्टिविटी वैल्यू सबसे कम होगा क्लियर, जिसका रेजिस्टिविटी वैल्यू सबसे कम होगा वो सबसे अच्छा कंडक्टर माना जाता है, जिसका कंडक्टिविटी वैल्यू ज़्यादा होता है वो अच्छा कंडक्टर माना जाता है क्लियर। एंड ये जो कंडक्टिविटी या फिर रेजिस्टिविटी है ये हम चैप्टर नंबर 3 में उसको डिस्कस करेंगे, अभी बस थोड़ा ऐसे समझने के लिए आप इसको देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट इन क्वेश्चन नंबर 10, मेथड ऑफ चार्जिंग ए कंडक्टर विदाउट ब्रिंगिंग ए चार्ज बॉडी इन कॉन्टैक्ट विथ इट। मेथड ऑफ चार्जिंग कौन सा, यहाँ पे वही तीनों मेथड ऑफ चार्जिंग है। तो एक तो फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन, तो जहाँ पे ये बोला जा रहा है कि विदाउट कॉन्टैक्ट चार्जिंग ए कंडक्टर विदाउट कॉन्टैक्ट एंड दिस प्रोसेस दिस मेथड इज कॉल्ड जनरली इंडक्शन। तो कौन सा इंडक्शन यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे बोला जा रहा है ऑप्शन आर गिवन मैग्नेटाइजेशन, तो यहाँ पे चार्जिंग हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हो रहा है, तो मैग्नेटाइजेशन का क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। मैग्नेटाइजेशन कब होगा, जब चार्जेस मतलब यूनिफॉर्मली विथ ड्रिफ्ट स्पीड में कंडक्टर के अंदर में मूव करेंगे तब जाके मैग्नेटाइजेशन या फिर मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे जनरेट होता है, तो यहाँ पे नहीं होगा। इलेक्ट्रिफिकेशन यहाँ पे हो सकता है पर, लेकिन इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स दैट चार्जिंग ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट क्लियर। इलेक्ट्रिफिकेशन मीन्स व्हाट, चार्जिंग ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट। एक न्यूट्रल ऑब्जेक्ट को चार्ज करने को ही हम जनरली क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन। चार्जिंग ए न्यूट्रल ऑब्जेक्ट आइदर पॉजिटिवली और नेगेटिवली क्लियर। तो चार्जिंग कैसे करेंगे, वही तीनों मेथड रहेगा वहाँ पे, फ्रिक्शन, कंडक्शन, इंडक्शन। तो यहाँ पे फ्रिक्शन एंड कंडक्शन जो होगा वो कॉन्टैक्ट वाला रहेगा, यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट टाइप बोल रहा है तो इंडक्शन होना चाहिए। तो कौन सा इंडक्शन होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन क्लियर। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी यहाँ पे लिखा गया, तो व्हाट डू बेसिकली मीन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, दैट विल बी टॉट इन चैप्टर नंबर 6। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, वहाँ पे जो करंट इंड्यूस होता है, हम क्या डिफाइन करते हैं, क्या कैलकुलेट करते हैं वहाँ पे, इंड्यूस्ड करंट
क्लियर, इंड्यूस्ड करंट, जस्ट अभी बस सुन लो यहाँ पे क्या क्या वर्ड्स, यहाँ पे टर्म्स यहाँ पे बोला जाए, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये सब हम लोग वहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. सो इट इज ऑल्सो नॉट द केस, सो इट विल बी ऑप्शन सी. In question number 11, what it is saying, a conducting sphere is negatively charged. A conducting sphere is negatively charged. Which of the following statement is true? So one conducting sphere, that means they have given you one conducting sphere and you are giving some charge to it, that means electrons, that means it will be negatively charged. So what actually happens when you give some free charges or free electrons to a given conductor? Clear? So that means these electrons, when you give, it will be distributed uniformly throughout the given conductor. Throughout मतलब उसके वॉल्यूम में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, कंडक्टर है तो उसके सरफेस में वहाँ पे क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्लियर? सो व्हेन फ्री electrons are transferred to a conductor, then they are distributed automatically on the surface of the given conductor. जो कंडक्टर है उसके सरफेस में वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्लियर? तो ऑप्शन में क्या बोला गया, चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एंटायर वॉल्यूम. एंटायर वॉल्यूम चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा बट एंटायर वॉल्यूम में वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है. क्लियर? चार्ज इज लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर. सो चार्ज यहाँ पे बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन जब आप ट्रांसफर करते हो, इलेक्ट्रॉन आप देते हो तो सेंटर में ही यहाँ पे चार्ज हो. इलेक्ट्रॉन नहीं, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन आप कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज दो या फिर नेगेटिव चार्ज दो यहाँ पे. क्लियर? तो ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं होता है. क्लियर? यहाँ पे क्या बोला गया है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, सेंटर में खाली नहीं रहेगा. क्लियर? एंड ये भी नहीं होगा. चार्ज इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द स्फीयर. अगर हम मान लो कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे दे रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नीचे ही खाली रहेगा ड्यू टू ग्रेविटी, because of gravity, because electrons are material particles, they are having mass, due to gravity they will simply sit at the bottom of the given metallic body. Clear? ये इसलिए नहीं होता है क्योंकि even though electrons are material particles, their mass is negligible, that means 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. क्लियर? बहुत ही कम है. तो ग्रेविटी तो एक्ट करेगा लेकिन वो नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम उसको. क्लियर? तो ये भी नहीं होगा. क्लियर? एंड चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर, सो दैट विल बी द करेक्ट वन. सरफेस में यहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है. Okay, so here in this particular case we will discuss the MCQ questions of properties of electric charge. So question number 12 says a cup contains 250 gram of water. There is a cup which contains 250 gram of water. So what it contains? It contains 250 gram of water. Okay. Find the total positive charge present in the cup of water. Total, it is asking total positive charge this within this 250 gram of water. So if you take a single water molecule, then it is neutral. Clear? If you take a single water molecule, then it is, in general sense, it is neutral. So all this 250 gram of water will be neutral. And the number of the total amount of, and here in this particular case, if you take a single water molecule, the amount of positive charge will be same as the amount of negative charge. If it is then only it will remain neutral. So here in this particular case, what it is asking, total positive charge present in the cup of water. That means total positive charge present in 250 gram of water. So now question is that, first question is,
how much charge is present in single water molecule? How much charge is present in a single water molecule? So how will you calculate that one? So if you take water molecule, so water, that means it contains 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atoms. So it contains 2 hydrogen and 1 oxygen. Clear? And how to calculate the charges present in the given atoms? So we'll calculate it from its atomic mass. So atomic from its atomic number. We'll calculate its charge from its atomic number. So hydrogen is having atomic number 1 and oxygen is having atomic number 8. Clear? So that means based upon from its atomic number we can say that hydrogen contains 1 proton and 1 electron, and so that means there are 2 hydrogen atoms. 2 hydrogen atoms will contain 2 protons and 2 electrons. So and here in this particular case oxygen will be as oxygen is having atomic number 8, so that means it will be having 8 protons and 8 electrons. So here in this particular case each hydrogen atom contains 1 proton and 1 electron. 1 proton and 1 electron. So and similarly that implies total number of protons present in the 2 hydrogen atoms of a single water molecule. So total number of protons और you can say electrons. यहाँ पे हमें बस पॉजिटिव चार्ज ही पूछा गया है, नेगेटिव चार्ज नहीं पूछा गया. सो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स present in 2 hydrogen atoms will be how much? 2. Clear? That means, and similarly total number of protons or electrons present in 8 oxygen atoms will be 8. So that means total number of, that means from here what you can say, total number of protons or electrons present in 10 individual atoms, in 10 total 10 individual atoms of water will be how much? 10. So total number of protons or electrons present in the individual atoms, combined individual atoms will be 10. That means total charge. What is the total charge? Total, you can say positive charge or negative charge, either positive charge or negative charge. Total positive or negative, total positive or negative charge present in a single water molecule will be how much? So charge contained in a single single proton, or we know that charge of a single proton or electron is how much? It is plus or minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So that means 10 positive charge or negative charge will contain how much charge? That means 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19. So it will be how much? 1.6 into 10 to the power minus 18 coulomb. So this is the, that means total positive charge or negative charge, that means plus, so plus or minus. So here in this particular case we want the positive charge. Clear? That means total positive charge present in a single water molecule
Total positive charge present in a single water molecule is how much? It will be 1.6 into 10 to the power minus 18 कूलम. क्लियर. तो सिंगल वाटर मॉलिक्यूल्स में आपका कितना पोस्ट प्रोटॉन्स रहता है? यहाँ पे 10 प्रोटॉन्स सिंगल वाटर मॉलिक्यूल्स और 10 प्रोटॉन्स और पॉजिटिव चार्ज. तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल में अगर इतना चार्ज रहता है तो 250 ग्राम जो वाटर है उसमें कितना वाटर मॉलिक्यूल होगा, तो उन सभी में कितना चार्जेस पॉजिटिव चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट होगा. तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कैलकुलेशन पार्ट रहेगा. सो राइट नाउ द अनदर क्वेश्चन इज दैट हाउ मेनी वाटर molecules will be present in 250 gram of water. Clear. So here in this particular case we'll take the help of mole concept. So what the mole concept is saying that, so from the what is the molecular mass of a single water molecule? So molecular mass of water molecule, if you take molecular mass of water is how to calculate the molecular mass. So here first of all we need to know that how many atoms are contained in the given water molecule. So there are 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom. So how will you calculate the molecular mass? We'll calculate the molecular mass from its atomic mass. So 2 hydrogen atoms are there, so 2 into atomic mass of hydrogen plus 1 oxygen atom is there, so 1 into atomic mass of oxygen. Clear. So what is the atomic mass of hydrogen? So 2 atomic mass of hydrogen is 1 and the atomic mass of oxygen is 16, so 1 into 16. So finally how will 2 plus 16, that will be equal to 18. So molecular mass of water is how much? 18 gram. It is the gram molecular mass. It is what? It is gram molecular mass. So that means from the mole concept theory, what we can say that, so here if you take 18 gram of water, if you take 18 gram of water, so 18 gram of water, how do you define this one? So 18 gram, that means 1 mole of water molecules will be present in 18 gram of water. 1 mole of H2O molecules will be present. 18 gram में 1 mole, that means 18 gram of water contains Avogadro's number, Na number of water molecules. 18 gram of water will contain Avogadro's number of water molecules. Then 1 gram of water will contain how many number of water molecules? So Na upon 18 number of water molecules. Clear. Then 250 gram of water will contain Na upon 18 into 250 number of water molecules. So here we got one thing is that 250 gram of water, how many number of water molecules will be present? So that value will be 6.023. Na is what? It is the Avogadro's number, that is 6.023 into 10 to the power 23. So 6.023 into 10 to the power 23 divided by 18 into 250. Clear. So here in this particular case, if you do this calculation, that will be coming out to be something 8.365 into 10 to the power 24. Clear. This much number of water molecule. That means here what we can say, in a 250 gram of water,
8.365 into 10 to the 24 number of water molecules will be there. So just before this one, we calculated that total positive charge present in a single water molecule is 1.6 into 10 to the minus 18. Total positive this one प्रेजेंट इन ए सिंगल मॉलिक्यूल में अगर इतना पॉजिटिव चार्ज रहता है 1.6, तो ये दिस पर्टिकुलर केस सिंग टोटल हियर यू कैन राइट टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट इन वन H2O molecule is how much? It is 1.6 into 10 to the power minus 18 coulomb. Clear? Then how much positive charge will be present in this much number of water molecules? So total positive charge present in 8.365 into 10 to the power 24 H2O molecules will be 8.365 into 10 to the power 24 into 1.6 into 10 to the power minus 18. So finally this will give us the value of total positive charge present in the present in 250 gram of water molecule. And if we do the calculation, so order will be how much? Order will be 10 to the power 10 to the power 6, 10 to the power 6, 10 to the power 6. And here if we do calculation, it will be coming out to be more than 10. So the value will be coming out to be approximately so order is 10 to, so these two options will be incorrect. ये दोनों तो नहीं होगा, तो हमें यहाँ पे बस उसको कैलकुलेट करना है. सो कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना वैल्यू आएगा? 1 point it will be coming out to be so 8.36. so let me take it 8.36, that means let me take it 8.4 here, 8.4 and multiplied with 16. 8.4 when it will be multiplied 16, so you can do the calculations and it will be coming out to be approximately 13.4 into 10 to the power 6. So and that value can be written as 1.34 into 10 to the power 7 coulomb. Clear? So finally here in this particular case, the option B will be the correct one. Clear? So total positive charge present in 250 gram of water will be 1.34 into 10 to the 7 coulombs of charge. Next, moving to question number 13. The question is saying is that a polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge of 6 into 10 to the minus 7 coulomb. So how much charge it is saying? Charge is negative 6 into 10 to the power minus 7 coulomb. Okay. The number of electrons transferred to polythene from wool. Number of electrons. It is asking number of electron transferred, n, and which we are transferring what? Electrons. That means charge of an electron. What is the charge of an electron? That is minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Clear? So in this particular case, so how will you? So what it is saying? The number of electrons transferred from polythene to wool. So polythene to wool, that means the wool will acquire negative charge, and the polythene will acquire positive charge. So that means what? They have taken one polythene sheet. Clear? This is polythene, and they have taken one woolen cloth, that is made up of wool. So I think they might have rubbed each other, and finally transfer of electrons takes place from polythene to wool. Clear? So some electrons. So how many number of electrons are transferred if the charge acquired by the wool is 6 into 10 to the minus 7 coulomb, and charge of individual electron is this much. So we'll use the concept of quantization condition. We'll take the help of quantization condition. What is quantization condition? Quantization condition is Q is equal to N into E.
So the value of n will be equal to q by e. So that will, if you divide this one, so negative 6 into 10 to the power minus 7 divided by e is negative 1.6 into 10 to the power minus 19. So here in this particular case, if you do the calculation, so it will be 6 upon 1, okay, it is 60 upon, let it be 60 upon 16 into 10 to the power 19 minus 7. Clear? So it will be approximately coming out to be, so approximately how much it will be comes out to be. So 60 upon 16 will be how much? So it will not be 4, so it will cut first of all 3. So 60 upon 16, 16 3 is 48, so it will be 12, so 120, so it will be 7, so approximately 3.7, approximately 3.7 into 10 to the power 12. So number of electrons present over here will be 3.7 into 10 to the power 12. So 3.7 approximately, so here 3.7 10 to the 10, 9.6, no, 9.6 part will not be there, 3.7, so 3.7 10 to the 12, so option D will be the correct one. Okay, so here in question number 14, what it is saying is that if 10 to the power 9 electrons move out of a body to another body every second. Suppose there are two bodies we are taking, body A and another body, let it be B. Okay, so fine. What is saying? 10 to the 9 electrons move out one body to another body in every second. That means how many electrons are moving? 10 to the power 9 electrons are moving in 1 second. Clear? So that means what? In 1 second, how many electrons are moving? 10 to the power 9 electrons. If 10 to the 9 electrons move in 1 second, then in 1 second, how much charge has moved? How much negative charge? That means electrons are negatively charged particles. How much charge has moved? That means if one charge is having 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb, then the negative charge moved from body A to body B is 10 to the power 9 into charge of individual electron, that is 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. So generally it is taken as minus 1.6, but as we are saying already that it is negative charge, so we can consider that one as positive. So that means total negative charge that has moved from body A to body B is 1.6 into 10 to the power minus 10 coulomb. That means the total negative charge that has moved from body A to body B is 1.6 into 10 to the minus 10 coulomb. Okay, fine. So here in this particular case, that means alternately what we can say over here is that 1.6 into 10 to the power minus 10 coulombs of negative charge has moved from body A to body B in 1 second. Clear? That means here what you can say, statement wise what you can say, 1.6 into 10 to the power minus 10 coulombs of negative charge has moved from body A to body B in 1 second. Clear? So in 1 second, if this much amount of charge, that means this much charge has moved in 1 second. Clear? Then 1 coulomb charge will move from body A to body B in how much seconds? So 1 upon 1.6 into 10 to the power minus 10 coulomb. So that means it will be let it be 1 by 1.6 into 10 to the power 10. Clear? So that means this 1 coulomb of charge will move from body A to body B in 1 by 1.6, so that 1.6, that will be approximately 0.625 into 10 to the power 10 seconds. So this will be the final answer. But okay, fine, here it is given in years, that means you have to convert
that second into years. Clear? So we know that in the general sense how you do that calculations. So here we know that that means 1 year. 1 year, that will be 365 days. 365 days, and each day it's 24 hours. Clear? And each hour is of 60 minutes, and each minute is of 60 seconds. That's what that means, this much second. So if if this, that means what you can say, this 365 into 24, if you want to convert that second into year, 24 into 3600 is approximately equal to 1 year. This much second is approximately equal to 1 year. Clear? Then 1 second will be how many years? That means 1 upon 365 into 24 into 3600. 3600 years. That means here in this particular case, then this much second, this given particular one जो कि अभी calculate किया गया है, then 0.625 into 10 to the power 10 seconds will be how many years? So 0.625 into 10 to the power 10 divided by 365 into 24 into 3600. Clear? So this much years. That means if you do the further calculation, so here further calculations will generally, it will give the result to be approximately 198 point something will get. Clear? 198.2 or 3 something will get. So finally approximate value will be 198 years. So it will be taken as 198 years. Clear? Okay, so here in question number 15, what it is saying is that the number of electrons that must be removed from an electrically neutral silver dollar to give it a charge, okay, charge of 2.4 coulomb. Okay, so electrically neutral silver dollar, suppose assume that silver the dollar coins, just like in India, यहाँ पे इंडिया में जो कॉइन्स हमारे 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ कॉइन, वैसा ही मान लो कि एक डॉलर वाला कॉइन है, कॉइन which is considered in dollars. Clear? So it is electrically neutral. That one is neutral. Clear? So if it is neutral, then how many number of electrons must be removed from this neutral dollar coin to give it a charge of 2.4 coulomb? Suppose if we remove one electron, that means how much charge we have removed? We have removed 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs of negative charge we have removed. That means if we remove one electron, then this particular dollar coin will gain a positive charge of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Clear? So similarly, how many number of electrons will be removed such that this 1.6 when it becomes some n times of this 1.6 will give 2.4 coulomb. That means n times of 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb will result into 2.4 coulomb. So here what we can do over here? So here in this particular case we have used the concept of quantization condition. That means n into this is what? This is E, and that is nothing but a total charge. So Q is equal to N. That means the value of N will be how much? Q upon E. So that means that value will be 2.4 divided by 1.6 into 10 to the power minus 19. So the value of N will comes out to be how much? So in this particular case, generally number of electrons we are removing. So
it should be taken in all the cases. We should take negative, so no problem. You can consider it to be positive, because already we are saying that we are removing the negative charge. Clear? As we are saying the negative charge, so no need to put the negative sign all the times. Clear? So 2.4, so it will be 24 upon 16 into 10 to the power 19. Clear? And if we do that calculation, it will be coming out of how much? It will be approximately 1.5. 1.5 into 10 to the power 19. So total number of electrons, total number of electrons must be removed from this dollar coin. Total number of electrons must be removed from this dollar coin will be 1.5 into 10 to the power 19. This much number. Okay, so here in question number 16, what it is saying is that a coin made up of aluminum and weighs 0.75 gram. That means the given mass here in this particular case, given mass of aluminum is given mass of aluminum is how much? 0.75 gram. Okay. It has square shape and its diagonals measure 17 mm. So there is a square shaped coin. There is a square shaped coin. There is a square shaped aluminum coin. The square shaped aluminum coin, which diagonals measure how much? Diagonals are generally 17 mm. And its weight is 0.75 ग्राम. इसका वेट कितना है? 0.75 ग्राम. It is electrically neutral and contains equal amount of positive and negative charge. That means it is electrically neutral. That means no net charge. Net Q net should be 0. Okay. That means equal amount of positive charge and negative charge. That means that Q net must contain Q positive plus Q negative, and magnitude of Q positive will be same as magnitude of Q negative. जितना positive charge होगा उतना negative charge यहाँ पे present है. Clear? तभी तो okay, then it will remain neutral. So here in this particular case, what it is asking, the magnitude of these charges is, the magnitude of the charges means जो पॉजिटिव चार्ज का टोटल मैग्नीट्यूड कितना है या फिर नेगेटिव चार्ज का टोटल मैग्नीट्यूड कितना होगा वो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के लिए बोला गया. ओके फाइन. सो व्हाट इट इज सेइंग, गिवन material is made up of aluminum. So we know that here in this particular case, we know that aluminum, that means here it is its atomic number is how much? Atomic number is 13. That means what it's will say, number of protons and number of neutrons. Number of protons will be 13, and number of electrons will be how much? Then it will be also be 13. Clear? So that means here in this particular case, if number of protons is 13, that means total positive charge. So that means total positive charge will be how much? Total positive charge of these 13 protons, as each proton contains a charge or possesses a charge of 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. Then 13 protons or 13 positive charge which are present in a single atom of aluminum will be having a charge of how much? 13 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Similarly, there are 13 electrons in a single aluminum atom. That means total negative charge present in a single aluminum atom will be 13 into negative 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. क्लियर? यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन यहाँ पे इसलिए ले रहे क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं यहाँ पे कि ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है. क्लियर? दैट्स व्हाई वी हैव टेकन negative of 1.6 into 10 to the minus 19 coulomb. Okay, so that means what here in this particular case, what we can say, that a single aluminum atom possess generally how much? So plus or minus
15 into 1.6 into 10 to the power minus 19 coulombs of either positive charge or negative charge. Clear? So this is the case. सिंगल एल्यूमिनियम एटम में इतना पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज रहेगा. तो पॉइंट से क्वेश्चन ये आता है कि 0.75 ग्राम में कितना एल्यूमिनियम एटम्स है. सो क्लियर. सो जो एल्यूमिनियम मेटेरियल यहाँ पे जो कॉइन यहाँ पे लिया गया है that is having a weight of 0.75 gram. So how will you calculate that how many aluminum atoms will be there? Question is that how many aluminum atoms will be present in 0.75 gram of coin. तो 0.75 ग्राम का जो कॉइन है उसमें कितना एल्यूमिनियम एटम होगा. तो ये हम मोल कॉन्सेप्ट से निकाल सकते हैं. क्लियर. सो पहले तो हमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे निकाल लेना है. सो n इज नथिंग बट n इज व्हाट गिवन मास divided by atomic mass or molecular mass. Here that means here atom is given. So atomic mass of aluminum. Clear. So given mass is how much? 0.7. It is made up of single atoms. Clear. Simple. So here we can take atomic mass of, what is the atomic mass of aluminum atom? Atomic mass of aluminum atom is 26, approximately 26.98 gram. Clear. And if we do that calculations, that will comes out to be 0.027, this much number of moles. Clear. So that means here in this particular case we know that from the theory of moles concept or from the Avogadro's theory that one mole of any atom or any molecule, one mole of any atom or any molecule, generally it contains how many numbers of that kind of atoms or molecules. So it contains Avogadro's number of that given atom or molecule. That means one mole of any atom or molecule generally contains Avogadro's number. That means 6.023. कोई भी एटम या फिर हम उसका वन मोल अगर हम ले रहे हैं, वन मोल ऑफ द गिवन एटम अगर हम लेंगे तो उसमें कितना एटम्स रहेगा या फिर कितना मोलिक्यूल्स रहेगा एवोगाड्रोस. जैसे कि एग्जांपल वाइज बोला जाता है, वन मोल ऑफ बनाना अगर आप ले रहे हो तो उसमें कितना बनानास वहां पे प्रेजेंट होंगे. तो दैट मीन 6.023 इंटू 10^23 नंबर्स ऑफ बनानास विल बी देयर. क्लियर. एक डजन आप बोलोगे तो उसमें कितना बनानास रहेगा, उसमें 12 बनानास जनरली रहता है. तो वैसा ही. So that means here in this particular case what we can write, so if one mole contains Avogadro's number of aluminum, यहाँ पे तो हम एल्यूमिनियम की बात करें, एल्यूमिनियम एटम्स. क्लियर. देन n मोल में कितना एल्यूमिनियम एटम्स रहेगा. सो n इंटू Na, और n का वैल्यू यहाँ पे कितना कैलकुलेट किया गया. सो इट विल बी दैट मीन्स हियर इन दिस पर्टिकुलर केस 0.027 मोल ऑफ एल्यूमिनियम विल कंटेन 0.027 इंटू एवोगाड्रोस नंबर Na, नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स. तो इतना एल्यूमिनियम एटम्स इतना मोल में रहेगा. और ये मोल कहाँ से निकाला गया, गिवन मास अपन एटॉमिक मास से निकाला गया. क्लियर. So finally here in this particular case, the number of aluminum atoms present in 0.75 gram will be number of 0.75 gram or 0.027 mole. Clear. 0.75 gram or 0.027 moles of aluminum. So number of aluminum atoms present in 0.75 gram or 0.027 mole of aluminum, or you can say 0.7 mole of aluminum coin will be how much? It will be
nothing but how will you do that calculation? So here 0.027 into Avogadro's number is 6.023 into 10 to the power 23. Clear? So this will be the case. So this much number of aluminium atoms, इतना एटम्स एल्यूमिनियम एटम्स वहाँ पे रहेंगे, कहाँ किस में रहेंगे? 0.75 ग्राम का जो कॉइन है उसमें इतना एटम्स रहेंगे। क्लियर? तो अभी अभी जस्ट यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ पे किया गया है कि एक सिंगल एल्यूमिनियम एटम में कितना पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज रहता है? 13 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। और एंड कितना एल्यूमिनियम एटम्स यहाँ पे प्रेजेंट है 0.75 ग्राम में, तो इसमें प्रेजेंट है 0.027 इंटू दिस मच एवोगाड्रोस नंबर। सो एक एल्यूमिनियम एटम में अगर इतना पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे रहता है तो इतने में कितना पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज होगा? दैट मीन्स व्हाट वी हैव टू डू ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर केस, we'll do the calculations over here. So the total positive or negative charge present in total positive और नेगेटिव चार्ज, यहीं से फर्दर कैलकुलेशन का यहाँ पे स्टेप है। टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन 0.027 into 6.023 into 10 to the power 23 numbers of aluminum atom will be how much? So it will be 0.027 into 6.023 into 10 to the power 23 into 13 into 1.6 into 10 to the power -19. Clear? So this much coulombs of charge will be there. Clear? तो इसको अगर हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना आएगा? 0.027 into 6.023 और 02 you can write into 13 into 1.6 into 10 to the power 23 -19. So it will be 10 to the power 4. So that value will comes out to be approximately, अगर इसको हम फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो it will be coming out to be 3.4 into 10 to the power 4 coulombs. Clear? ये वैल्यू कितना आएगा? 3.4 into 10 to the power 4 coulomb यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा। Clear? So that means here in this particular case 3.4 into 10 to the power 4, 3.4 से यहाँ पे दिया गया 3.47 10 to the power 10 to the 4 यहाँ पे रहेगा। क्लियर? सो नॉट 10 to the 2, so option A will be the correct one. Okay, so here in question number 17, what it is saying is that an object of mass 1 kg contains 4 into 10 to the 20 atoms. Suppose there is a object whose mass is given how much? 1 kg. ये एक 1 kg का ऑब्जेक्ट है। क्लियर? और इसमें कितना एटम्स है? नंबर ऑफ एटम्स इज हाउ मच? 4 into 10 to the power 20. क्लियर? दिस इज द नंबर ऑफ एटम्स। अच्छा, नेक्स्ट इज इफ 1 इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी एटम ऑफ द सॉलिड। तो ये जो सॉलिड है, ये जो ब्लॉक यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे, इसमें से हम क्या रिमूव कर रहे हैं? वी आर रिमूविंग द इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब भाई अब मान लो कि यहाँ पे बोला गया है इफ इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम एवरी एटम ऑफ सॉलिड। यहाँ पे कितना नंबर ऑफ एटम है? 4 into 10 to the 20 नंबर्स ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 kg। तो हर एक एटम से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिमूव्ड फ्रॉम 1 kg। 1 kg से कितना इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो सकता है? सो एक एटम से अगर एक निकालें तो नंबर ऑफ एटम से 4 into 10 to the 20, दैट मीन्स वी आर रिमूविंग 4 into 10 to the 20
number of electrons will be removed. Clear? बट यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि 1 kg से रिमूव किया जा रहा है. इसमें क्वेश्चन में फर्दर यहाँ पे ये बोला गया है कि द चार्ज गेन्ड बाय द सॉलिड इन 1 ग्राम. क्लियर? ये 1 kg के अंदर में इससे हम एक 1 ग्राम का अगर टुकड़ा लेंगे. क्लियर? ये 1 kg का जो ब्लॉक है उससे हम क्या करेंगे, 1 ग्राम का एक टुकड़ा यहाँ पे ले रहे हैं. इफ यू जूम दैट वन, तो इस ये जो टुकड़ा है, दिस पर्टिकुलर पीस दैट इज ऑफ 1 ग्राम. क्लियर? तो ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन्स एक इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से, इंडिविजुअल एटम से निकाल रहे हैं, तो 1 kg से तो इतना इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएगा. क्लियर? तो इतना इलेक्ट्रॉन्स में जितना चार्ज होगा, तो वो चार्ज भी हम. So here in this particular case, the first thing that we want to do is that how many here the question is that how many atoms will be there in 1 gram of the given solid. So I think what it is saying is that 4 into 10 to the power 20 4 into 10 to the power 20 atoms are present in 1 kg of the given block. That means 4 into 10 to the power 20 atoms are present in 1000 gram of the given block. Clear? So that means what you can say, alternately what you can say, 1000 gram of the given block contains how many number of atoms? 4 into 10 to the power 20 atoms. Clear? So then 1 gram, then here 1 gram of the given block will contain how many atoms? So 4 into 10 to the power 20 divided by 1000. So it will be 4 into 10 to the power 17 atoms. तो इसका मतलब ये है कि 1 ग्राम, that means here in this particular case what we can say, 1 gram of the given block will contain how many atoms? 4 into 10 to the power 17 atoms. Clear? And here in this particular case, if we are removing electrons, another question is that here it is saying that the charge gained by the solid, then what kind of charge it will gain? Clear? We are removing electrons. That means what kind of charge it will gain? It will gain पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? इलेक्ट्रॉन्स का रिमूवल से कौन सा चार्ज एक्वायर होता है? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है ऑब्जेक्ट. क्लियर? सो कितना इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल रहे हैं? क्लियर? तो अभी क्वेश्चन ये है कि 1 ग्राम में इतना एटम्स है. क्लियर? 1 ग्राम में कितना एटम्स है? 4 into 10 to the 17 एटम्स. दैट मीन्स हियर here we are removing 4 into 10 to the power 17 numbers of electrons from 1 gram of the given solid. क्लियर? जो 1 ग्राम का सॉलिड है, तो उसमें से हम इतना इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं. तो इतना इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, तो कितना चार्ज निकाल रहे हैं? कितना नेगेटिव चार्ज यहाँ पे निकाल रहे हैं? सो वी नो दैट वन चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज हाउ मच? 1.6 negative 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Clear? So that means how many electrons are there? 4 into 10 to the power 17. So 4 into 10 to the power 17 electrons will contain a charge of how much? So 4 into it will be 4 into 10 to the power 17 into negative 1.6 into 10 to the power minus 19. So finally that value will comes out to be 6.4 into 10 to the power minus 2 coulombs. So here in this particular case, as we are removing electrons, that means how much negative charge we are removing? We are removing negative charge from 1 gram, that is minus 6.4 into 10 to the power
minus 2 coulombs of negative charge. Clear? So that means how much? That means that object will acquire equal amount of positive charge. That will object will acquire equal amount of positive charge. That means positive charge gained by the 1 gram of solid will be 6.4 into 10 to the power minus 2 coulombs of positive charge it will gain. So finally answer will be 6.4 into 10 to the minus 2 coulomb. That means option B will be the correct.